Good morning, students. In this lecture, we discuss combined standard deviation. If arithmetic mean, standard deviation, and number of items of two or more groups are known separately, then the combined standard deviation can be computed from such information. The combined standard deviation of two group is denoted by standard deviation 1, 2, and is computed as follow is equal to n1 standard deviation 1 square n2 standard deviation 2 the square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2, where standard deviation 1 and 2 is equal to combined standard deviation. Standard deviation 1 is equal to standard deviation of the first group standard deviation of second group and d1 is equal to mean 1 minus combined mean. d2 is equal to mean 2 minus combined mean. The above formula can be extended to calculate the standard deviation of 3 or more groups. इसनों ਅਸੀਂ extend भी कर सकते हैं अगर standard deviation 3 groups ਦਾ find out करना ਹੁੰਦਾ then ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾਲ n3 standard deviation 3 ਦਾ square and n3 d3 ਦਾ square. So first example of combined standard deviation ਦੀ two samples of size 100 and 150 respectively have means 50 and 60 and standard deviation 5 and 6. Find the mean and standard of the combined sample of size 250. Here are two samples of size given, that is n100 and 2 is 150. Given की है पहला सी और लिखांगे. Given is equal to n1 है साढ़े को 100 and 2 is equal to 150 and have mean 50 and 60. So mean 1 50 and mean 2 60 है. And so की given a standard deviation. Standard deviation 1 is equal to 5, standard deviation 2 is equal to 6. नाउ हम ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ d1 ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਆउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ. ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਾਂਗੇ. ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n1 mean 1 plus n2 mean 2 over n1 plus n2 is equal to, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਰਾਂਗੇ. n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੀਨ 150 n2 150 multiply mean 2 is 60. n1 is 100 plus n2 is 150 is equal to 5000 plus 9000 divided by 250 is equal to combined mean ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ 56. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਾਂਗੇ d1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ. d1 is equal to mean 1 minus combined mean. mean 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 50 minus combined mean is 56.
is equal to -6. Now D2 is equal to mean to combined mean minus mean to the value -60 minus 56 is equal to 4. ਹੁਣ ਅਸੀਂ find out ਕਰਾਂਗੇ combined standard deviation of two group. N1 standard deviation 1 the square plus N2 standard deviation 2 the square plus N1 D1 square plus N2 D2 square over N1 plus N2. ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ स्टैंडर्ड डिविएशन ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 36 ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 25 ਆਏਗੀ N2 150 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ वैल्यू इज 36 और अगर D1 का स्क्वायर करें D1 स्क्वायर की आएगा 36 D2 स्क्वायर 16 प्लस N1 की वैल्यू है साढ़े कोल 100 मल्टीप्लाई 36 N2 इज 150 मल्टीप्लाई 16 divided by 100 plus 150 is equal to 100 multiply 25 150 multiply 36 plus 3600 plus divided by 250 is equal to 13900 divided by 250 and combined standard deviation the value आएगी that is 7.46. Now second example is for a group containing 100 observations, the arithmetic mean and standard deviation are 8 and under root 10.5. For 50 observations selected from the 100 observations, the mean and standard deviation are 10 and 2 respectively. Find arithmetic mean and standard deviation of other half. Given देखनी है given values के लिए साढ़े को 100 observations given and that means कि total number of observation given है that is 100 and combined arithmetic mean given है that is 8 and combined standard deviation given है that is 10.5 for 50 observation selected from 100 observations that means N1 ऐसी की assume करेंगे is 50 mean 1 is 10 and standard deviation 1 is 2 so N2 की होएगा because N is equal to होता है N1 plus N2 so N2 is equal to N minus N1 so N की वैल्यू साढ़े कोल 100 minus 50 so N2 is equal to 50 so हम सब तो पहले ਅਸੀਂ find out करेंगे combined mean N1 so N1 mean 1 plus N2 mean 2 divided by N1 plus N2 वैल्यू ਨੂੰ substitutes करेंगे combined mean की वैल्यू साढ़े कोल कितनी है 8 N1 की वैल्यू है 50 mean 1 10 N2 again 50 mean 2 ਅਸੀਂ find out करना
n1 plus n2 is equal to 100 100 इन्ना जाके मल्टीप्लाई होया एक ही बन गया 800 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 मीन 2 इज इक्वल टू ए 500 इस साइड गया वैल्यू क्या होगी माइनस होगी एक हो गया 300 इज इक्वल टू 50 मीन 2 so mean 2 is equal to 300 divided by 50 that is 6 now हम इसे फाइंड आउट करेंगे d1 दी वैल्यू d1 is equal to mean 1 minus combined mean 10 minus 8 that is 2 so d1 स्क्वायर क्या आएगा इसका फिर स्क्वायर करेंगे 4 d2 is equal to mean 2 minus combined mean mean 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 minus combined mean is 8 again value is minus 2 so d2 square is equal to again 4 now ਹੁਣ ਅਸੀਂ find out ਕਰਾਂਗੇ combined standard deviation n1 standard deviation 1 square n2 standard deviation 2 square n1 d1 square n2 d2 square divided by n1 plus n2 now substitute the value we get standard deviation combined standard deviation the value is equal to under root 10 plus 5 is equal to n1 is 50 multiply 4 plus 50 standard deviation 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ find out ਕਰਨਾ n1 again 50 multiply 4 plus 50 multiply 4 divided by 100 n1 and n2 ਦੀ value plus करके 100 now squaring both sides ਜਦੋਂ ਦੋ both sides square ਕਰਾਂਗੇ then under root cancel हो जाएंगे दोनों वैल्यू आएगी 10.5 is equal to 200 plus 50 standard deviation 2 square plus 200 plus 200 divided by 100 ये वैल्यू इतना क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 10.5 multiply 100 is equal to 200 plus 200 plus 200 600 plus 50 standard deviation to the square मल्टीप्लाई करके इसमें वैल्यू आएगी 1050 is equal to 600 plus 50 standard deviation to the square so therefore 50 standard deviation to the square is equal to 1050 minus 600 is equal to 50 standard deviation to the square is equal to 450 600 इस विचों माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 450 so therefore standard deviation to the square is equal to 450 divided by 50 is equal to 9 एक है standard deviation the square so standard deviation to the value की आएगी that is 3 so thus mean to 6 and standard deviation 2 is 3